Exercise 9.5 question number 19. For the surface defined by the parametric equations x is equal to 2 cos hyperbolic u cos b, y is equal to 3 cos hyperbolic u sin v z, and z is equal to 6 sin hyperbolic u. Find a normal vector to the surface at the point for which u is equal to 1 and v is equal to pi by 3. We have x r is equal to r is a vector, normal vector is equal to x with x component I plus pi component j and j plus z component k is equal to 2 cos hyperbolic u cos b I plus 3 cos hyperbolic u sin b plus 6 sin hyperbolic u and k. Differentiate with respect to u, v and यू एंड यू फर्स्ट हम यू से करेंगे फिर देन वी से करेंगे. आंसर इज 2 साइन हाइपरबोलिक वी कॉस वी जो हमारा एज इट इज साइन यू फंक्शन प्लस 3 साइन हाइपरबोलिक यू साइन वी जे प्लस 6 कॉस हाइपरबोलिक यू के इज इक्वल टू 1/2 2 sin hyperbolic I plus square root of 3/2 sin hyperbolic u j plus 6 cos hyperbolic u k. पुट करेंगे v is equal to pi by 3 साइन की साइन वैल्यू pi by 3 180 is equal to 60 3 1 3 3 6 60 पर हमारा cos जो होता है वो 1/2 होता है, साइन जो होता है वो हमारा अंडर 3/2 होता है वैल्यू. Sin hyperbolic u I plus 3 square root of 3 sin hyperbolic u j plus 6 cos hyperbolic u k. ज़ीरो होता है ना, cos b with respect to u ज़ीरो हो जाएगा, सो हम ओनली 1 ले लेंगे जहाँ हमारा ये कांस्टेंट वर्क करेगा. और जो cos hyperbolic u है ना, इसकी हमने sin hyperbolic u कर लिया. Then how we have dr with respect to 2 is equal to 2 cos hyperbolic u and sin v iota plus I function I component plus 3 cos hyperbolic u cos b j plus 0 k. With respect to v is equal to square root of 3 x cross minus 2 cos hyperbolic u plus 1/2 cross 3 cos hyperbolic u j plus 0 v is equal to pi by 3. pi by 3 जहाँ होगा वहाँ हमने v को pi by 3 पुट कर देना है. यहाँ पे इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर होता है माइनस बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉस pi by 3 पर साइन की वैल्यू आती है इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस हाइपरबोलिक यू आई प्लस 3/2 कॉस हाइपरबोलिक यू जे प्लस 0 के. द रिक्वायर्ड फैक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज, दोनों को क्रॉस कर देंगे. डी आर डी यू जो अभी हमने फाइंड किया है इन इसे मैट्रिक कंडीशन फॉर्म में लिख लेंगे. डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे आई जे के. साइन हाइपरबोलिक यू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन हाइपरबोलिक यू cos 6 cos hyperbolic minus square root of 3 cos hyperbolic u 3/2 cos hyperbolic u and 0. First I with respect to cos 0 6/2 18/2 9 minus 9 cos hyperbolic u स्क्वायर हो जाएगी. cos hyperbolic से प्रोडक्ट होगा u I minus 6 square root of 3 cos hyperbolic square u v plus 3/2 plus 9/2 0 3/2 and same terms sin hyperbolic u and cos hyperbolic u 9/2 and 3/2.
is equal to minus 9 cos hyperbolic square u j minus 6 square root of 3 cos square root of 3 sin is equal to u, and u is equal to 1 direction ratio u is equal to 1 पुट कर देंगे minus sin the cos it is given u is equal to 1 and v is equal to pi by 3 given है. जहाँ u है वहाँ हम ये पुट कर देंगे minus 9 cos hyperbolic square u I minus 6 square root of cos h u j minus 3 sin hyperbolic u k is the answer of find a normal vector. This is the final normal vector to surface at the point for which u is equal to 1 and v is equal to pi by 3. Now second question number 29 point exercise 9.5 for the surface defined by x is equal to 3 plus cos phi and cos theta, y is equal to 3 cos phi into sin theta, z is equal to sin phi. 0 और theta lies between the 0 and 2 pi. हमारे cylindrical coordinate and the spherical coordinates जो given है phi and psi में है. Rectangular and the polar coordinates are similar. Z is equal to only Z. But P and R are to find P and phi. Show that the parametric curve for which phi is constant and theta varies are circles in plane parallel in the xy plane. Also show that the parametric curves for theta is constant and phi varies lie in planes through the z-axis. Find a vector normal to this surface at the point for which theta is equal to pi by 4 and phi is equal to 2 pi by 3. 2 हमें given होते हैं, then the coordinates of the spherical or cylindrical surface. First, we consider the parametric curve for which phi is constant. Since x is equal to 3 plus cos phi and cos theta, y is equal to 3 plus sin phi and sin theta. Squaring and adding we get. दोनों को हमने स्क्वायर करना ऐड करना है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 plus cos pi whole square, which represent a circle in the plane that is equal to constant, that is a plane parallel to the xy plane. Again, if theta is constant, then we have cos theta minus y sin theta is equal to 0, which represent the plane containing z axis. If we now we have r vector is equal to xi plus yj plus zk is equal to 3 plus cos phi cos theta I plus 3 cos component of y and xj we will substitute, and z the plus 3 phi sin theta j plus sin phi k. डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. थीटा हमारे लाइक करते हैं 0 विद रिस्पेक्ट टू फाइव, 0 हो जाएगा. -3 प्लस कॉस फाई साइन थीटा आई प्लस 3 कॉस फाई कॉस थीटा जे प्लस 0 के इज इक्वल टू माइनस सिमिलर टर्म है कॉस थीटा एंड गिवन वैल्यूज गिवन है आई फाइव पर वैल्यू स्क्वायर रूट पाई बाय 4 एंड 2 पाई बाय 3 is equal to minus 2 pi by 3 pi by 4 and pi by 4 and 3 pi by 2 2 pi by 3. ये हमारी वैल्यू गिवन है. हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू साइन थीटा 1 upon the square root of 2 and plus 3 minus cos theta 3 minus 1 by 2 1 square root of 2 plus j 0.
एलसीएम ले लेंगे और पाई बाय 4 पर हमारी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 into 2 pi by 3 2 into 180 divided by 3 360 8 120 is equal to minus 1 by 2 cos phi and theta is equal to minus 1 by 2 but इक्वल कर देंगे थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 j इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हम पुट करेंगे -5 ऐसे मिलेंगे 3 पाई बाय 2 3 2 6 -1 5 अंडर रूट वेक्टर बन जाएगा एट द गिवन थीटा पाई बाय 2 एंड 2 पाई बाय 3 del r d r d phi से विथ रिस्पेक्ट टू फाई हम इसे इंटीग्रेट करें डिफरेंशिएट करेंगे वेक्टर को एंड वैल्यू भी पुट करते जाएंगे थीटा एंड पाई गिवन है दोनों की वैल्यू पुट करने से हमारी आंसर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1/2 पाई आई माइनस j component I component minus square root of 3 upon the 2 square root of 2 j component minus 1/2 k at theta is equal to pi by 4 and phi is equal to 2 pi by 3. Now we have there any normal vector the surface is जब हम when we cross the determinant is 0 consider किया जाता है so we will find the vector or determinant is equal to 5i यहाँ वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे आई कंपोनेंट के लिए इज इक्वल टू 5i स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई कंपोनेंट पर 5 4 स्क्वायर रूट j माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 is the required normal vector. Theta and phi lies between 0 and 2 pi and phi lies between minus pi to pi. Here is the phi and theta. Then we will put the phi here. Phi minus cos पर हम -1/2 वैल्यू अकर होती है थीटा पर हमारी 1/√2 245 डिग्री एंड 120 डिग्री। सो हमारा ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। ये फार्मूला है इसे क्रॉस करेंगे और नॉर्मल वेक्टर ऑफ गिवन कंडीशन फाइंड करिए।